So this is the question number 2 from 2023 midterm ignition paper, and this question comes under the topic basic computer organization. So in this particular question you need to tell कि एक मेगाबाइट के अंदर हमारे टोटल कितनी बाइट्स होती हैं। तो अगर मैं बात करूं एक किलोबाइट की, तो एक किलोबाइट के अंदर हमारी कितनी बाइट्स होती है 2 की पावर 10। सिमिलरली एक एमबी के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं आपकी 2 की पावर 10 किलोबाइट्स। तो कितनी हो गई आपकी 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 10, तो कितने हो गए आपके 2 की पावर 20 बाइट्स। ओके ओके। देन सिमिलरली 1 जीबी कितना होता है आपका 2 की पावर 30 बाइट्स, यानी कि 2 की पावर 10 MB। ओके, hence for this one option number B is the correct one. Now based on the similar concept we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box what will be the right answer for this one. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.